Hello everyone and welcome back to my playlist of head and neck anatomy, and today we are going to start chapter number 3 from BDC FASCIA volume 3 and the name of the chapter is side of the neck. So बहुत important chapter होने लगा ये है और basically आज की वीडियो में जो मुझे डिस्कस करना है तफसील से वो है deep fascia of the neck because this is very important topic. Okay, so कुछ introductory paragraphs हैं, quickly उनको डिस्कस करते हैं और फिर डायरेक्टली जंप करेंगे, स्टार्ट करेंगे deep fascia. Now introductory line, the beauty of पहली लाइन ही है, the beauty of the neck lies in its deep fascia, और यही आज का हमारा टॉपिक भी है. रीजन इसका ये है because deep fascia is highly developed, is divided into multiple layers in the neck region and it performs extremely important functions. So therefore it's the beauty of the neck. ये पूरे का पूरा जो neck region है उसका अगर deep fascia समझ में नहीं आया तो neck region समझ में नहीं आएगा. ओके, बेसिकली बाकी सारी बातें मैं स्किप कर रहा हूँ. लैंडमार्क्स भी इसलिए स्किप कर रहा हूँ बिकॉज ये लैंडमार्क्स दे प्रीटी इजी और अभी जो डिस्कशन हम करेंगे तो वो आपको वैसे समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम जो मुझे डिस्कस करनी है. यहाँ पे साइड ऑफ द नेक की बाउंड्रीज आपको बता रहे हैं बेसिकली. सो साइड ऑफ द नेक की जो बाउंड्रीज हैं वो बेस ऑफ द मैंडिबल से एंगल ऑफ द मैंडिबल, उसके बाद मैस्टोइड प्रोसेस, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन. सो दैट इज बेसिकली द साइड ऑफ द नेक बाउंड्री. सो ये पूरा साइड ऑफ द नेक कहलाता है. अच्छा, फिर ये साइड ऑफ द नेक जो है एक मसल यूं ऑब्लिकली हमारी नेक पे है जिसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. अगर आप अपनी गर्दन को, अपने नेक को टेढ़ा करके देखेंगे सो आपको साइड पे एक मसल प्रोमिनेंट फील होता है. दैट इज बेसिकली द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. अब ये पूरा है साइड ऑफ द नेक और इसमें यहाँ इस तरह से मैस्टोइड प्रोसेस से ये मसल निकलता है और यहाँ तक आ जाता है मैनिब्रम स्टर्नाई तक. तो ये जो ऑब्लिक मसल है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, इसकी प्रेजेंस से व्हाट हैपेंस कि साइड ऑफ द नेक जो है, नेक रीजन दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है. ये आगे वाला जो ट्रायंगल है ये कहलाता है एंटीरियर ट्रायंगल और जो पीछे वाला ये ट्रायंगल है ये कहलाता है पोस्टीरियर ट्रायंगल. ठीक है, तो हम इनको इस तरह से पढ़ेंगे भी अलग से कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एंटीरियर. लेकिन सारी कहानी ये है कि सबसे पहले आपको ये पता हो कि व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ द साइड ऑफ द नेक एंड देन कौन सा मसल है जो नेक को एंटीरियर ट्रायंगल और पोस्टीरियर ट्रायंगल में डिवाइड करता है. तो दैट मसल इज कॉल्ड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बाउंड्रीज. द साइड ऑफ द नेक इज रफली क्वाड्रिलेटरल इन आउटलाइन. इट इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय द एंटीरियर मीडियन लाइन, posteriorly by the posterior border of the trapezius muscle. That is the posterior boundary. That is the trapezius and this is the posterior boundary. Okay, and what else they are talking about? Base of the mandible, mastoid process, superior nuchal line and inferiorly by the clavicle. ये सारी चीज जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई इस डायग्राम में, this is all. के anteriorly it is the midline, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज द लिमिट, एंटीरियर लिमिट ऑफ द साइड ऑफ द नेक, देन बेस ऑफ द मैंडिबल, देन एंगल एंड देन द मैस्टोइड प्रोसेस एंड देन सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस एंड देन पोस्टीरियरली द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजॉइड मसल और नीचे क्लेविकल. तो ये पूरा इस तरह से ये साइड ऑफ द नेक बन गया. ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं. और फिर दिस स्पेस इज डिवाइडेड by an oblique muscle which is sternocleidomastoid into anterior and posterior triangles. So we have discussed this completely. Okay, now स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया. बॉडी के हर पार्ट में ऑब्वियसली सबसे पहला पार्ट होता है स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया और फिर डीप फेशिया. तो डीप फेशिया आज का हमारा टॉपिक है, बट स्किन के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, पढ़ लेते हैं इसको. स्किन ऑफ द नेक इज सप्लाइड बाय सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल नर्व्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछते हैं एग्जाम में. द एंटेरोलेटरल पार्ट, नाउ दिस इज टू मच डिटेल यार, इसको खुद से पढ़ लो कौन सी नर्व कुटेनियस सप्लाई करती है. दिस यू विल हैव टू रिमेंबर. ओके, ये याद करना पड़ेगा यार, इसमें आई कांट हेल्प यू. Now the superficial fascia contains areolar tissue like anywhere else in the body, but there is a muscle present as well. Face में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि face के superficial fascia में muscles मौजूद होते हैं, superficial muscles. ऐसे neck में भी एक muscle की thin layer होती है which is called platysma. Lying deep to the platysma are cutaneous nerves, superficial veins, lymph nodes and so many other structures. And in fact जो deep fascia है वो भी deep to platysma होता है. यानी अगर मैं आपको ये वाली डायग्राम दिखाऊं, ये वाली डायग्राम, so if you look at this diagram here, this is platysma guys. ये platysma है and platysma is a muscle layer which is present in the superficial fascia. और जो deep fascia है ये green, it is actually deep to platysma. Okay, so that's kind of interesting stuff. कि अक्सर मैं एग्जाम में स्टूडेंट से पूछता भी हूँ कि मुझे बताएं कि platysma deep fascia के ऊपर होता है, नीचे होता है, यानी superficial होता है, deep होता है. तो वो कहते हैं यार deep fascia के तो अंदर ही होगा ना, मसल है. लेकिन ऐसा नहीं है. platysma is present superior, superficial to deep fascia. Okay,
So that's all about the superficial fascia. So आपको basically अब तक मैंने introductory lines में क्या बताया कि deep fascia is very important. I also told you what are the boundaries of side of the neck, skin और superficial fascia की हमने बात की. Now let us move on to the hero topic of today's video, which is the deep cervical fascia. Very important topic, so listen carefully. Deep fascia जो cervical region में मौजूद है, it is also known as fascia coli, and that is an extremely important topic. In fact, अगर neck region में आपने deep fascia को सही से study नहीं किया और इसको master नहीं किया, then you are actually in trouble for exam purposes. अब जो deep fascia है neck का, it is condensed to form the following layers. ये 6 distinct layers होती हैं. There are 6 distinct layers, and they are named according to their location and what they harvest actually. Okay, अभी diagrams में देखते भी हैं. पहली जो लेयर है, that is called the investing layer. Investing layer का मतलब ये है कि it is simply covering and investing and you know like एक cover की तरह पूरे internal जो structures हैं उनको ये cover करता है. So that is why it is called the investing layer, because it invests the deeper structures. Then there is a pretracheal fascia, which is obviously be related to something tracheal region. देखते हैं अभी diagram में और पढ़ते हैं. Then there is prevertebral fascia. Vertebrae के पहले होगा prevertebral. Then there is carotid sheath, as you can imagine from the name. It will be related something to the carotid vessels. Then there is buccopharyngeal fascia and pharyngobasilar fascia. So ये there are 6 different types of deep fascia. ठीक है, ये important topic है इसलिए इसको गौर से सुनिए. Now one by one इन सबको पढ़ते हैं. इनकी location देखेंगे ये कहाँ पर हैं. Attachments hardcore important नहीं है एग्जाम के लिए कि exactly किस जगह ये superiorly attach होते हैं, किस जगह inferiorly. मोटा मोटा आपको idea होना चाहिए कि grossly कहाँ पर ये हर part of deep fascia मौजूद होता है. But more important is कि उसका function क्या है. If it is covering a structure तो वो structure क्या है. So let's start with the first thickening, the first layer of the deep fascia, which is called the investing layer. It lies deep to platysma, जो superficial muscle था उसके deep होता है ये, and surrounds the neck like a collar. So that is the importance of investing layer. It is covering the neck throughout like a collar, like a cover. It forms the roof of the posterior triangle of the neck. ये बात तब समझ में आएगी जब posterior triangle पढ़ेंगे. Attachments कहाँ? अच्छा पहले मैं diagram पे दिखा दूँ ताकि आपको overall view इसका समझ में आ जाए. So this is section transfer section है through somebody's neck. Okay, and if we start looking from the very outside, obviously skin होगा, superficial fascia होगा, फिर ये एक superficial muscle है platysma, then the green bit. पूरी बीडी चौरासिया की कलर स्कीम यही है कि the green thing is the deep fascia. ओके अब ये डीप फेशिया की जो सबसे आउटर लेयर है जो पूरे नेक को यानी सुपरफिशियल फेशिया ये है, उसके बाद जो ये लेयर चल रही है, दिस लेयर व्हिच इज कवरिंग द होल नेक स्ट्रक्चर्स लाइक अ कॉलर, लाइक अ कवर, ये जो पूरी आउटर लेयर है ना, दिस लेयर इज नोन एज इन्वेस्टिंग लेयर. सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज इनसाइड द इन्वेस्टिंग लेयर. So investing layer is the outermost layer of the deep fascia. Okay, so it covers it like a collar. Attachments, superiorly it is attached to occipital protuberance, superior nuchal line, mastoid process, external acoustic meatus and base of the mandible. Between ये अच्छा ये this is not very high yield, so I usually don't worry about this कि exactly मुझे pinpoint इसकी attachment पता होगी ये किधर है. ठीक है. Now there is a superficial lamina named parotid fascia, is a thick and dense and attached to the zygomatic arch. The deep lamina is thin and is attached to the styloid process, the tympanic plate and the mandible. Between the styloid process and the angle of mandible, the deep lamina is thick and forms a stylomandibular ligament. Not extremely important, not very high yield. Okay, so don't worry about this. At the base of the mandible, it encloses submandibular gland. The superficial lamina is attached to the lower border of the mandible and deep lamina to the mylohyoid. Again, not very high yield, but this is important line here. Okay, it encloses the submandibular gland, and they say they have shown it in figure 3.4b. So let's have a look at figure 3.4b. So that is figure 3.4b. And if you look here, so this is the deep lamina of investing layer and this is the superficial lamina of the investing layer. In the middle of these two lamina is the submandibular gland. Okay, and that was something important.
important, right? ये attachments, I mean, if you want to study, you can study. To me, this is not high yield. Exam में इतना ज़्यादा ये पूछते नहीं, okay? मतलब major concept is more important. अच्छा, इंफीरियर इसकी जो अटैचमेंट्स हैं, दे आर स्पाइन ऑफ स्कैपुला. सो बेसिक आइडिया ये है कि ये बिल्कुल बेस ऑफ स्कल से लेके जहां से नेक शुरू होती है, ऑब्वियसली ये जो पूरा रीजन है जहां से नेक स्टार्ट हो रही है और फिर स्कैपुला तक ये आ रहा होता है, तो ये सारे रीजन में इन्वेस्टिंग लेयर होती है. तो ऊपर इन स्ट्रक्चर्स पे अटैच होगी और नीचे के स्ट्रक्चर्स जो हैं, दैट इज स्पाइन ऑफ स्कैपुला, इंफीरियर अटैचमेंट, और एक्रोमिन प्रोसेस and clavicle and manubrium. So it basically is attached to give you the boundary of the neck region. तो neck region की ये पूरी जो एरिया है, it is easy to understand. मतलब superficial concept याद रखना मुश्किल नहीं है कि obviously it will be attached to the mastoid process which will be here, nuchal lines which will be here, occipital protuberance which will be here. तो यहाँ से ये start हो जाता है base of the mandible और ये यहाँ तक चलता रहता है, manubrium, sterni और different parts of scapula and acromion process. तो ये पूरे नेक रीजन को इन्वेस्टिंग लेयर कवर करता है. ओके, अब अगर आपको स्पेसिफिक्स याद रखने हैं तो मैंने वो पढ़ दिए आपके लिए, यू कैन रिमेंबर देम इफ यू वांट टू. नाउ द फेशिया, किस फेशिया की बात हो रही है? डीप फेशिया की बात हो रही है. और डीप फेशिया के कौन से लेयर की बात हो रही है? इन्वेस्टिंग लेयर की. इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप फेशिया स्प्लिट्स टू इनक्लोज द सुप्रास्टर्नल एंड सुप्राक्लाविकुलर स्पेसेस. नाउ दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसेस. हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ये थोड़ी देर में अभी डिस्क्राइब करेंगे. ओके, अच्छा, अब जो इन्वेस्टिंग लेयर है पोस्टीरियरली कहाँ अटैच होता है? टू द लिगामेंटम न्यूकी, मतलब द वर्टिब्रल कॉलम एंड द स्पाइन ऑफ द सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्री. सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्री पे अटैच होता है. एंटीरियरली symphysis mentae, hyoid bone. So these are all the attachments, not high yields. Both above and below the hyoid bone, it is continuous with the fascia of the opposite side. Easy to understand thing. Other important features of what? Of the investing layer. Okay, we are studying deep fascia, or deep fascia mein we are talking about the investing layer of the deep fascia. The investing layer of the deep cervical fascia splits to enclose कौन से मसल्स? ये दैट इज इंपॉर्टेंट. हाई यील्ड, ये इंपॉर्टेंट है. इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया कौन से मसल्स को एक्चुअली स्प्लिट करके अपने अंदर ले लेता है? दैट इज ट्रेपीजियस एंड स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड. एक्चुअली इस डायग्राम में शायद ये, आई मीन दिस इज आल्सो विजिबल हियर. सो इफ यू लुक हियर, दिस थिंग, द आउटर मोस्ट लेयर इज द इन्वेस्टिंग लेयर. और आप ये देखेंगे किस तरह से इसको स्प्लिट करके, दिस इज स्प्लिटिंग हियर, और बीच में ये मसल मौजूद है. कौन सा मसल है? स्टर्नोक्लेइडो mastoid. Also this muscle, इसको भी ये स्प्लिट करके देखें. अगर मैं इसको, लेट मी रब दिस आउट ताकि ये दोबारा से एक दफा क्लियर हो जाए बात. सो दिस इज द इन्वेस्टिंग लेयर, और देखें यहाँ पे ये स्प्लिट हो गया और यहाँ स्प्लिट हो गया. इसके बीच में कौन सा मसल आ गया? स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड. इसी तरह ये डीप लेयर है और ये स्प्लिट हो गया और इसके बीच में कौन सा मसल आ गया? ट्रेपीजियस. सो कौन से मसल्स इसमें कवर होते हैं इन्वेस्टिंग लेयर में? ट्रेपीजियस एंड स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड. कौन से सेलेवरी ग्लैंड्स इसमें इनक्लोज होते हैं? पैरोइड ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर. रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, कौन सी स्पेसेस एसोसिएटेड हैं इन्वेस्टिंग लेयर के साथ? सुप्रास्टर्नल एंड सुप्राक्लाविकुलर. ऑब्वियसली दिस विल बी अबव क्लैविकल, दिस विल बी अबव स्टर्नम. सो ये जो हेडिंग थी ना, दिस इज हाई यील्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बताया जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल ये जो एग्जैक्ट अटैचमेंट्स और स्टाइलवर्ड प्रोसेस और ये सारी जो है, दिस इज ऑल कहानी, बट दिस इज आस्क्ड इन एग्जाम्स. ओके, नाउ द टू स्पेसेस व्हिच इज सुप्रास्टर्नल स्पेस and supraclavicular space, ये जरा सुन लें इनकी इंपॉर्टेंस क्या है. The suprasternal space, which is also called the space of Burns, कंटेन्स, उसमें क्या क्या है उस स्पेस में? पहली तो बात, ये स्पेस होती किधर है? ये जो सुप्रास्टर्नल स्पेस है, ये सुप्रास्टर्नल होगी स्टर्नम के ऊपर. सो इफ दिस इज स्टर्नम, ये मैनिब्रम स्टर्नाई है, सो स्टर्नम के ऊपर ये जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड सुप्रास्टर्नल. और ये स्पेस बाउंड हो रही है किससे? इन्वेस्टिंग लेयर से. दैट्स द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप फेशिया इन द सर्वाइकल रीजन. और उसके और मैनिब्रियम के सुपीरियर बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है, ये सारी स्पेस कहलाती है सुप्रास्टर्नल स्पेस. इसमें क्या क्या है? इसमें ऑब्वियसली आप देख रहे हैं स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड का स्टर्नल हेड है दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट. देयर आर जुगुलर वेनस आर्च, दिस इज द जुगुलर वेनस आर्च, एंड इट आल्सो कंटेन्स lymph nodes, and it also contains interclavicular ligament. So ये चार structures हैं. This is important for your exams. What are the contents of suprasternal space? You must know the contents of suprasternal space. Okay, then there is supraclavicular space, which is traversed by
external jugular vein, supraclavicular nerves, and cutaneous vessels. So let's have a look at the figure number 3.6. Okay, so this is figure number 3.6, and what we are talking about here, this is the closure version of the supraclavicular space. Okay, it is traversed by, यानी इसमें से क्या क्या गुजरता है, external jugular vein. Okay, so that's the external jugular vein there. Remember these contents, these are important for your exam. Supraclavicular nerves and some cutaneous vessels. Supraclavicular nerve and some cutaneous vessels. Okay, so that's an important point. So that region is basically the supraclavicular space. Okay, जिसमें से क्या क्या गुजर रहा है, again the thing which is passing through this is the external jugular vein and supraclavicular nerve, right? Okay, तो ये दोनों spaces आपको पता होनी चाहिए in relation to the investing layer. Okay, now some clinical stuff. Parotid swelling are very painful due to unyielding nature of the parotid fascia. जो लेयर है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया की, वो ऐसे स्प्लिट होके बीच में उसके क्या आ जाता है, पैरोटिड ग्लैंड. तो जब कभी पैरोटिड ग्लैंड स्वेल करता है तो डीप फेशिया जाहिर है उसमें फाइबर्स हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं, सो दैट इज अ वेरी पेनफुल स्वेलिंग. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाइल एक्साइजिंग द सबमैंडिबुलर salivary gland, the external carotid artery should be secured before dividing it. Well, that's too much of detailed surgery की अभी नहीं पढ़ रहा इसको. Division of external jugular vein in the supraclavicular space may cause air embolism and consequent death because the cut ends of the veins are prevented from retraction and closure by the fascia attached firmly to the vein. Now that is an extremely important point because that's a life and death type of stuff which you have to understand. You must understand this. Okay, now let me take you to this diagram. Now that is an important diagram, and this is the importance of supraclavicular space. So listen to this carefully. Now that is the green bit is the investing layer of deep fascia in the cervical region, और ये इसमें से ट्रेवर्स कर रही है, इसमें से गुजर रही है एक्सटर्नल जुगुलर वेन. ओके, अब ये इस तरह से होता है कि ये जो डीप फेशिया है ना, ये इसकी वॉल्स के साथ अटैच होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं इस सेक्शन में आपको समझाऊं तो दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और इसको ना इस तरह से डीप फेशिया टाइटली बाउंड रखता है. तो होता ये है कि अगर ये ल्यूमेन या वॉल ऑफ द वेन कोलैप्स होना चाहे तो ये कोलैप्स नहीं हो सकती, बिकॉज इसको यहाँ से टाइटली रिट्रैक्ट करके रखता है ये डीप फेशिया. सो फेशिया उसको इस डायरेक्शन में पुल करके रखता है, तो वेन का जो ल्यूमेन है वो काइंड ऑफ ओपन रहता है. तो अब ये पॉइंट जरा इस कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा सुनिए. अगर किसी वजह से डिवीजन ऑफ एक्सटर्नल जुगुलर वेन करनी पड़े यानी उसको काटना पड़े, सो एयर मे एंटर, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि अगर आप किसी वेन को काटते हैं तो वेन रिट्रैक्ट करती है और उसका ल्यूमेन क्लोज हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल जुगुलर वेन के साथ अगर छेड़खानी कर रहे हैं सुप्राक्लैविकुलर स्पेस में, तो चांसेस ये हैं कि वो वेन ओपन ही रहेगी और ओपन रहते हुए उसमें एयर एंटर हो सकती है, दैट कैन लीड टू एयर एम्बोलिज्म, इवन डेथ. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर व्हेन डूइंग सर्जरी, प्लेइंग विद दिस सुप्राक्लैविकुलर स्पेस एंड द एक्सटर्नल जुगुलर वेन. ओके, Now, तो ये था जनाब पहला लेयर ऑफ डीप फेशिया इन द सर्वाइकल रीजन, जिसका नाम था इन्वेस्टिंग लेयर. ओके, सो दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टिंग लेयर. मैं फिर बता रहा हूँ कि हम फेशियाकुलाई यानी डीप सर्वाइकल फेशिया स्टडी कर रहे हैं, जिसकी 6 लेयर्स हैं. पहली लेयर का नाम था इन्वेस्टिंग लेयर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड लेयर विच इज कॉल्ड प्री ट्रेकियल फेशिया. नाउ as the name indicates, pre-tracheal fascia, obviously trachea से related some important point होगा. okay, pre यानी trachea के पहले होगा ये, और इसकी importance ये है कि this fascia encloses and suspends thyroid gland. Thyroid gland इसके अंदर समझो लिपटा हुआ होता है, and it forms the false capsule of the thyroid gland. It is continuous with other fascia, buccopharyngeal for example. Where is it attached? पहले तो इसकी location देख लेते हैं, फिर attachments आपको मैं बताता हूँ. So if we go back to figure number 3.2, let me find where is that figure. That's a good figure to understand the concept and location of pretracheal fascia. So look here. This is the thyroid gland. Okay, और ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के रिंग्स हैं. दिस इज द कार्टिलेज 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 कार्टिलेज. सो ये सब ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के सामने ये जो ग्रीन लाइन चल रही है, दैट इज द
प्री-ट्रैकियल यानी ट्रैकिया से पहले का फेशिया. So that's the pre-tracheal fascia. और pre-tracheal fascia देखें इन्वेस्ट कर रहा है किस चीज को? It is surrounding the thyroid gland. So this is the very important point you have to remember regarding pre-tracheal fascia. Okay, so remember this picture and now let us go back and start reading कि इसकी superior attachments क्या हैं, inferior attachments क्या हैं. So superiorly it is attached to the hyoid bone, oblique line of the thyroid cartilage laterally and cricoid cartilage. Inferiorly कहाँ attach होता है? Below the thyroid, it encloses the inferior thyroid vein, passes behind the brachiocephalic vein and finally blends with the arch of aorta and the fibrous pericardium. और actually ये diagram में नजर भी आ रहा है. If we again go back and look here, okay, so देखेंगे superiorly it is going to attach in the hyoid bone area, hyoid bone में attach हो रहा है और फिर ये cartilages के साथ attach होता है tracheal cartilages के साथ और inferiorly ये कहाँ attach हो रहा है देखें fibrous pericardium and arch of aorta. Okay, so इसकी attachments are easily understandable. What else do we need to know? On either side it forms the front of the carotid sheet and fuses with the deep fascia of the sternocleidomastoid. This is a simple rule for the whole body कि कोई भी deep fascia आसपास के deep fascia के साथ merge कर जाता है. So there is nothing confusing about it. Other features: the posterior layer of the thyroid capsule is thick. On either side, it forms suspensory ligament for the thyroid known as the ligament of Berry. Now, the ligaments are attached chiefly to the cricoid cartilage and may extend to the thyroid cartilage. The support of the thyroid and do not let it sink into the mediastinum. So ये support करता, मैं बताता हूँ इसके बारे में. The capsule of the thyroid is very weak along the posterior border of the lateral lobes. Okay, now this is more sort of surgical point for you to understand, and this is more discussed in chapter number 8. So we'll talk about it later on. कि thyroid gland का further support mechanism क्या होता है. Okay, so don't worry about it at the moment. The fascia provides a slippery surface for free movement of the trachea during swallowing. Okay, it reduces friction when the trachea is undergoing different mechanical changes during swallowing process. Actually overall not high yield. So the high yield stuff for pretracheal fascia, let me tell you, which is the second layer of the deep fascia of neck, is that it is important because it suspends thyroid gland. Okay, so if you remember just this thing, you are good. Clinically, neck infections in front of the pretracheal fascia may bulge in the suprasternal area or extend down into anterior mediastinum. The thyroid gland and all thyroid swelling move with degglutination because the thyroid is attached to the cartilages of larynx by suspensory ligaments of Berry. So, ये दोनों points इस diagram पर explain होते हैं. Again, if we look at the anatomy of pretracheal fascia, so any infection which is anterior, so this is pretracheal fascia, so any infection here which is anterior to the pretracheal fascia may actually descend down, पूरा नीचे तक जा सकता है in the anterior in the mediastinum. Okay, और दूसरा important point ये है कि जो thyroid gland है, it moves up with the swallowing procedure because it is actually attached with different cartilages of trachea by the suspensory ligament as well as it is invested in the pretracheal fascia. So उसकी वजह से swallowing के साथ thyroid move करता है. Okay, so that's not something difficult to understand. Now the third layer of the deep fascia, total कितनी layers हैं? 6 layers. Now we are at layer number 3, which is prevertebral fascia. It lies in front of the prevertebral muscles, okay, and forms the floor of the posterior triangle of the neck. Attachment superiorly, the base of the skull, and inferiorly, it extends into the superior mediastinum where it splits into anterior and posterior layers. Anterior layer blends with buccopharyngeal fascia and posterior layer is attached to the anterior longitudinal ligament, not high yield. So even if you don't remember this, you are fine. Attachments are not high yield. It is separated from pharynx. Forget about it, okay? Now, other features. The cervical and the brachial plexus lie behind the prevertebral fascia. Important point. The fascia is pierced by 4 cutaneous branches of the cervical plexus. So that is actually an important point कि जो prevertebral fascia है is associated with the cervical and brachial plexus. Okay, as the trunks of the brachial plexus and the subclavian artery passes laterally through interval between the scalene anterior and the scalene medius muscles, they carry with them a covering of the prevertebral fascia known as axillary sheath. Now that is another important point कि जो axillary sheath है वो actually extension है prevertebral fascia की. So this can be asked from you कि what is axillary sheath? It is extension of the prevertebral fascia. Prevertebral fascia give rise to axillary sheath.
Okay, now the subclavian and axillary veins lie outside the sheath, and as a result they can dilate during increased venous return from the limb. So by design nature ने आपकी जो ये veins हैं, major veins हैं, axillary vein और subclavian vein, इनको शीथ के अंदर नहीं रखा, क्योंकि शीथ के अंदर होते तो expansion के लिए volume कैसे expand होता, और volume expand होना ज़रूरी है if there is increased venous return from the limbs. Okay, the fascia provides, किस fascia की बात हो रही है? Prevertebral fascia provides a fixed base for the movement of the pharynx, the esophagus and carotid sheath. That's the important function. देखो, आपको हर fascia की लोकेशन पता होनी चाहिए. अगर उसके एसोसिएटेड कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उसको पीर्स कर रहे हैं, या उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो पता होने चाहिए. फिर उस फेशिया का पर्पस क्या है वो पता होना चाहिए. सो दैट इज द पर्पस, हेल्प इन स्वेलोइंग एंड फिक्सिंग द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद स्वेलोइंग. ओके, दैट इज द जॉब ऑफ द प्रीवर्टिब्रल फेशिया. हर फेशिया का कोई ना कोई फंक्शन है. प्रीट्रैकियल फेशिया, थायराइड ग्लैंड. इन्वेस्टिंग लेयर, पूरी नेक को कवर करना. So these are all important points. Okay, clinical stuff. Neck infection behind the prevertebral fascia arise usually from tuberculosis of the cervical vertebrae. Okay, now pus produced as a result may extend in various directions. It may pass forward from a chronic retropharyngeal abscess, which may form a bulging in the posterior wall of the pharynx in the median plane. Actually ये जो facial प्लेन्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, सो से फॉर एग्जांपल दिस वन. अब अगर तो मैं आर्बिट्रेरली बात कर रहा हूं, अगर इस एरिया में सपोज कोई एब्सेस है तो वो लिमिट होगा, यहां से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि दिस इज ऑल कवर्ड विद द डीप फेशिया वेरी टाइटली. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर कोई एब्सेस हो जाता है, तो अब देखो इस एब्सेस के पास बहुत ऑप्शन है. ये एब्सेस यहां भी जा सकता है बिटवीन द मसल प्लेन्स, वो यहां मूव कर सकता है, वो यहां जा सकता है. ये एब्सेस यहां से मूव करता हुआ यहां आ सकता है. इट कैन गो एनीवेयर, बट यहां आके रुक जाएगा, क्योंकि यहां पे लिगामेंटम न्यूकी है जो इन दोनों कंपार्टमेंट्स को सेपरेट कर रहा है. So it actually follows the infection or abscess, इस तरह की ये fluid accumulation, they follow the facial planes. Okay, तो ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन की है. Now neck infections in front of the, ये हमने बात की थी neck infection behind the prevertebral fascia. Now we are talking about neck infection in front of the prevertebral fascia in the retropharyngeal space, usually arise from the suppuration, that is formation of pus in the retropharyngeal lymph nodes. So दो अलग अलग ETO pathogenesis हैं. Behind the pretracheal fascia अगर infection है, that is usually because of tuberculosis. अगर in front of the prevertebral fascia infection है, that is usually infection of the lymph nodes. ठीक है, the pus from an acute retropharyngeal abscess which bulges forward in the paramedian position due to fusion of buccopharyngeal fascia to prevertebral fascia in the median plane. Too much detail इतना याद रखने की जरूरत नहीं है. The infection may extend, this is important, down through the superior mediastinum into the posterior mediastinum. So figure number 3.3, if we have a look, where are you? Figure number 3.3, again this diagram, जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई कि जो भी फेशिया है उसके आपको फेशियल प्लेन्स एसोसिएटेड उस वक्त समझ में आएंगे जब आप इस बात को समझेंगे कि उसकी लोकेशन क्या है. फॉर एग्जांपल ये वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्री है, तो ये वाला जो फेशिया है probably this is the prevertebral fascia, and let us look, yeah, this is the prevertebral fascia. अब इस prevertebral फेशिया के पोस्टीरियर साइड पे, यानी इस साइड पे अगर इन्फेक्शन है तो वो इस सारे एरिया को अफेक्ट कर सकता है, और अगर एंटीरियरली इन्फेक्शन है तो वो बल्ज कर सकता है. ये फेरिंजियल रीजन है, दिस इज एसोफेगस, दिस इज ट्रैकिया, और वो यहाँ कहीं भी किसी भी प्लेन में मूव कर सकता है, अप डाउन लेटरल. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी लोकेशन किधर है, और फिर उससे आपको आइडिया होगा कि जो एब्सिस मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो सकती है. राइट? Okay, now let us talk about the next layer. मैं दोबारा चलूं पीछे. Let me go back to this initial conversation. हमने बात की थी कि there is an investing layer, there is a pretracheal fascia, there is a prevertebral fascia, and now we are talking about carotid sheath. Okay, so layer number 4 of deep cervical fascia, which is the carotid sheath. It is a condensation of fibroareolar tissue around the main vessels of the neck. It is formed on anterior aspect by pretracheal fascia and on posterior aspect by prevertebral fascia. So इन दो fascia से actually एक पूरी covering बनती है around the major blood vessels of the neck, which is called carotid sheath. Now इसके contents very important. ये भी important था कि how is it formed. Now the contents. The contents of the are common or internal carotid arteries, internal jugular vein, the vagus nerve. It is thin over the vein because it allows some expansion there. Okay, in the upper part of the sheath there are 9th
11th, 12th nerves also. These nerves pierce the sheath at different points. So this is hell important paragraph. आपको ये बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि what are the contents. कौन से contents होते हैं जो throughout the length होते हैं, कौन से contents होते हैं जो उसमें upper part में होते हैं फिर pierce कर जाते हैं. So ये जो nerves हैं, cranial nerve 9, cranial nerve 11 and cranial nerve 12, they are present in the upper part of the sheath only and then they pierce it. Okay, so let's try to have a look here. So look here, this is the transverse section और ये जो green covering आपको नजर आ रही है, this is obviously the carotid sheath. और इसके अंदर क्या है? There is a common carotid artery, there is internal jugular vein, obviously there is vagus nerve. ठीक है? And then outside immediately relation में क्या मौजूद है? There is sympathetic trunk and ansa cervicalis. Okay, so these are all the contents of the carotid sheath. Okay, is that clear to everyone? It should be. एक और diagram मुझे दिखानी थी. Well, this one, yeah, this one. So here you see this is the carotid sheath, this green bit, this, और इसके अंदर फिर ये you have the structure. This is internal jugular, this is common carotid artery, and that's a vagus nerve. Okay, so that's carotid sheath covering completely the major blood vessels of the neck region. ये है carotid sheath. Now let us talk what do we need to know more about the relationships of carotid sheath. The ansa cervicalis embedded in the anterior wall of the carotid sheath, ये भी मैंने आपको दिखाया भी था इस diagram में. These are ansa cervicalis, actually almost in direct anterior wall relation. ऐसा लगता है उसमें embed हुए हैं. And there is a cervical sympathetic chain which is lying immediately behind the carotid sheath. ये देखें cervical chain, okay, sympathetic trunk. Now the sheath is overlapped by anterior border of the sternocleidomastoid and is fused to the layers of the deep cervical fascia. Easy. Now layer number 5 of the deep fascia and then layer number 6 of the deep fascia. Okay, layer number 5 है buccopharyngeal fascia. As the name indicates, it's in the buccal and the pharyngeal region. This fascia covers all the constrictor muscles externally and extend onto the superficial aspect of the buccinator muscle. This is attached to pharyngeal tubercle. Retropharyngeal space lies posterior to the इस space के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर में. It lies posterior to the buccopharyngeal fascia. Alar fascia is an answer, so I mean not very high yield I would say, but the only important point here which you have to remember, number one obviously कि ये है किधर, this is around all the constrictor muscles of the pharynx. So this is the location and to prevent them is the job. And then the second point which is important is this: the posterior space between the alar and the prevertebral fascia is the dangerous space in the neck. Hold on, stay tuned, we will talk about it later on. Okay, now और मैं ये आपको याद दिलाऊंगा कि buccopharyngeal fascia पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि there is a dangerous space in the neck like Bermuda Triangle. Okay, now the pharyngobasilar fascia is especially thickened between the upper border of the superior constrictor muscle and base of the skull. It lies deep to the pharyngeal muscles, the only thing that you basically have to remember. So if we go back originally to this discussion again, okay, there are what is deep fascia? Deep fascia is obviously the deep fascia of cervical region. It is also called fascia coli. उसकी further कितनी specialized thickening layers होती हैं? 6. Investing layer, pretracheal, prevertebral, carotid, buccopharyngeal and pharyngobasilar. Okay, so we have discussed all of them. ये क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, इनकी लोकेशन के बाद इनके कंटेंट्स क्या हैं, इनको कोई चीज क्रॉस कर रही है तो वो क्या है और इनका फंक्शन क्या है. सो डीप फेशिया ऑफ नेक इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, इसको भी यहाँ रखते हैं. इस वीडियो को, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे फिर अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.